Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। थैंक यू सो मच माता जी। सॉरी मेरे से थोड़ी सी गलतियां हुई हैं। दिस इज माय फर्स्ट चांस, प्लीज एक्सक्यूज मी एंड ब्लेस मी सो दैट आई कैन डू मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. No problem. Thank you so much for that wonderful. Hare Krishna. आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस विद्यागति प्रभु को बुलाती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आज का नित्यम भागवत सेवा में जुड़े हुए, जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी भक्तों का मेरा स्वागत। तो आज हमें सौभाग्य मिल रहा है फिर एक बार परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा स्वामी महाराज के द्वारा उनका वाणी सुनने के लिए। तो महाराज का परिचय सभी को अभी जानते हैं, तो हम ज़्यादा उसमें प्रभुपाद के शिष्य है महाराज, तो बहुत प्रचार कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पूरा एक महीना भीतर महाराज यहाँ दामोदर देश में जा रहे हैं और हमें ज्ञान बांट रहे हैं। तो उन ज्ञान के द्वारा हमारा हृदय में शुद्धता आ रही है। तो हम महाराज को सीधा आगमन करते हैं। हरे कृष्ण महाराज। तो वेलकम यू। Yes, Hare Krishna. Can you hear me? Yes Maharaj, yes Maharaj. Okay. Also Nanda Kishore Prabhu will be doing the Anuvad, Hare Krishna, translation. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat. Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 10, chapter number 80, about Sudama Brahman visits Dwarka. Text number 41. Is that right? Hare Krishna? It's 43. Yes, Maharaj. Text 43. Okay, text 43. You want to read Nanda Kishore Prabhu? Yes, Maharaj. Hare Krishna. Itam vidani anekani vasatam guruveshmani gurur anugrahe naiva puman purna prashantaye. शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय, उनके शिष्यों की जय। इत्तम वितानी, इस तरह की, अनेकानी, अनेक बातें, वसताम, रहते समय हमें, गुरु के, वेशमणि, घर में, गुरु की, अनुग्रहेण, कृपा से, एव, केवल, पुमान, पुरुष, पूर्णः, पूर्ण, प्रशांतये, पूर्ण शांति प्राप्त करने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा,
अपने गुरु के घर में रहते समय हमें इस तरह के अनेकानेक अनुभव हुए। कोई भी व्यक्ति अपने गुरु की कृपा मात्र से जीवन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है और शाश्वत शांति पा सकता है। Okay. ब्राह्मण उवाच किम अस्माभिर अनिर्वित्तम देवदेव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरुर अभूत। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। आज के सभी श्लोकों के श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय, उनके शिष्यों की जय। श्री ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने कहा, किम क्या, अस्माभिः हमारे द्वारा, अनिवृत्तम नहीं प्राप्त किया गया, देवदेव हे देवों के ईश्वर, जगत ब्रह्मांड के, गुरु हे गुरु, भवता आपसे, सत्य पूर्ण, कामेना इच्छाओं से, ये शाम जिनके, वासह निवास, गुरुहो गुरु के घर पर, अभूत था। ब्राह्मण ने कहा, हे देवों के देव, हे जगत गुरु, चूंकि मैं पूर्ण काम अपने गुरु के घर पर आपके साथ रह सका, अतः मुझे अब प्राप्त करने के लिए बचा ही क्या है। सुदामा ब्राह्मण अच्छी तरह समझता था कि यह तो उसका परम सौभाग्य था कि वह अपने गुरु के घर पर श्री कृष्ण के साथ रह सका। इसलिए उन्हें जो भी कठिनाइयां हुई, वे गुरु की सेवा की महत्ता बताने के लिए भगवान की कृपा की अभिव्यक्ति थी। श्रील प्रभुपाद ने विद्वान ब्राह्मण के भावों को इस प्रकार व्यक्त किया है। सुदामा ने कहा, हे कृष्ण, आप भगवान हैं और सबों के परम गुरु हैं, और चूंकि मैं अपने गुरु के घर पर आपके साथ रहने का सुअवसर प्राप्त कर सका, अतः मेरी समझ में नियत वैदिक कर्मों के विषय में अब कुछ और करना शेष नहीं रहा। तो ये भी है प्रभु लास्ट। यस्य प्रभु। यस्य छंदोमयां ब्रह्म तेह आव परम विभो, श्रेयसाम तस्य गुरुषु वासोत्यंत विदंबनम। यस्य जिसका, छंदः वेदों, मयम से युक्त, ब्रह्म परम सत्य, देहे शरीर के भीतर, आवपनम बोया गया खेत, विभो हे सर्वशक्तिमान, श्रेयसाम शुभ लक्ष्यों का, तस्य उसका, गुरुषु गुरुओं के साथ, वासह निवास स्थान, अत्यंत अत्यधिक, विदंबनम विदंबना, हे विभु आपका शरीर वेदों के रूप में ब्राह्म्य है और इस तरह जीवन के समस्त शुभ लक्ष्यों का स्रोत है। आपने गुरु की पाठशाला में जो निवास किया वह तो आपकी लीलाओं में से एक है, जिसमें आप मनुष्य की भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा की भेंट नामक 80वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा Om Jnanatimmirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama
Rama Rama Hare Hare. So we're hearing this wonderful pastime of Lord Krishna's encounter with Sudama. Sudama had come to visit him in Dwarka. तो हम ये बहुत अद्भुत लीला सुन रहे हैं सुदामा की मुलाकात कृष्ण के साथ। सुदामा कृष्ण को द्वारका में मिलने आए थे। And Lord Krishna had recounted one of the pastimes, one of the things which happened to them when Sudama and Lord Krishna were together in the Gurukul of Sandipani Muni. तो भगवान कृष्ण वापस याद कर रहे हैं एक लीला को जो सुदामा और उनके साथ हुई थी जब वो दोनों संदीपनी मुनि के गुरुकुल में रहते थे। We heard how the two of them were stuck in the forest the whole night, and the spiritual master came in the morning and found them and praised them for accepting so much difficulty on behalf of their spiritual teacher. तो हम सुनते हैं कि किस प्रकार वे दोनों वन में पूरी रात के लिए फंस गए थे और फिर सुबह उनके गुरु आते हैं और उनको ढूंढते हैं और उनकी गुणगान करते हैं कि उन्होंने कितनी तकलीफ उठाई अपने गुरु के लिए। So Lord Krishna, we read the verse this morning, Lord Krishna is saying that simply by the grace of the spiritual master, a person can fulfill life's purpose and attain eternal peace. तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमने उस श्लोक में सुना कि केवल अपने गुरु की कृपा से एक व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और शाश्वत शांति पा सकता है। Just like we sing every morning, we sing the Guru Vastakam, and then the final verse says, Yashya Devi, Yashya Prasadu Bhagavat Prasadu, Yashya Prasadu Nagati Katopi. By the mercy of the spiritual master, one gets the mercy of Krishna. And without the mercy of the spiritual master, there's only havoc on the path of spiritual life. तो हम सुबह गुरुष्टकम में गाते हैं कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो की गुरु की कृपा से हमको कृष्ण की कृपा मिलती है और बिना गुरु के कृपा से केवल उत्पात मच जाएगा आध्यात्मिक पथ पर। So Lord Krishna himself is praising the opportunity to serve the spiritual master. तो भगवान कृष्ण खुद गुणगान कर रहे हैं उन अवसरों का जो गुरु को सेवा करने के लिए मिलते हैं। Although Lord Krishna himself is the supreme personality of Godhead and he's worshipped by all the spiritual teachers, he himself sets the example for others by praising service to the spiritual master. तो हालांकि भगवान श्री कृष्ण खुद परम पुरुषोत्तम भगवान है और सभी गुरुओं द्वारा उनकी पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ पर भगवान खुद एक उदाहरण बना रहे हैं, खुद वो गुरु की सेवा की प्रशंसा करके। Lord Krishna is not only praising service to the spiritual master, he showed it by his own example that he personally served his guru. भगवान श्री कृष्ण केवल गुरु की सेवा की प्रशंसा ही नहीं कर रहे हैं, वो खुद अपने उदाहरण से दिखाए कि उन्होंने अपने गुरु की सेवा की। Lord Krishna of course is not in need of any guru, but for the sake of showing an example to others, he went to the guru's ashram and he stayed there and he took education there. तो भगवान श्री कृष्ण को कोई गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन उदाहरण दिखाने के लिए भगवान गुरु के आश्रम में गए, वहां रहे और वहां ज्ञान प्राप्त किए। Everything he learned, everything he was taught, he learned immediately. It was very natural for Lord Krishna because he is the source of all Vedic knowledge. तो जो कुछ उनको सिखाया गया था वो तुरंत ही सीख जाते। ये बहुत ही स्वाभाविक ही था कृष्ण के लिए, क्योंकि वो तो वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं। But Lord Krishna is playing the part of an ordinary human being.
And he wants to show all of us what is the duty of an ordinary human being. क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक साधारण व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं और वो हमें दिखाना चाहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति की क्या कर्तव्य होते हैं. That everyone needs a spiritual master, and those who can should go to the ashram of the spiritual teacher and get education there. क्योंकि हर किसी व्यक्ति को एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है और जिसके लिए संभव है उसे गुरु के आश्रम में जाना चाहिए और वहां ज्ञान प्राप्त करना चाहिए. So Sudama is appreciating this, and Sudama replies, the last two verses of this chapter, Sudama is replying to Lord Krishna, and he's appreciating Lord Krishna's association. तो सुदामा इसकी सराहना कर रहे हैं और आखिरी 2 श्लोकों में वो उत्तर दे रहे हैं और भगवान कृष्ण का जो संग उन्हें मिला उसकी प्रशंसा कर रहे हैं. And Sudama understands how fortunate he was that he was able to live personally with Lord Krishna. सुदामा ये बता रहे हैं कि वो कितने भाग्यशाली थे कि वो व्यक्तिगत रूप से कृष्ण के साथ रहे थे. That together they lived in the ashram of the spiritual teacher, and they served all the orders of the spiritual master, and they accepted all the inconvenience which came. तो वे दोनों मिलके गुरु के आश्रम में रहे थे और उन्होंने गुरु की सब आज्ञाओं का पालन किया था और इसमें जो भी असुविधा हुई थी वो सब असुविधाएं उन्होंने झेली थी उस समय. We have to understand that entering into the ashram of the spiritual teacher does not mean there won't be any difficulties. There will be difficulties, there will be problems, but by the grace of the Lord, we can overcome all the difficulties. जब हम गुरु के आश्रम में जाते हैं हमें समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ तकलीफें नहीं होंगी, कठिनाई नहीं होंगी, परंतु भगवान की कृपा से हम उन कठिनाइयों को लांघ सकते हैं. And the difficulties which we undergo in the service of the spiritual teacher are for our own spiritual purification. और हम जो भी कठिनाइयां हम हमारे गुरु की सेवा में हम जिनका सामना करते हैं हमें समझना है कि ये हमारे आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए है. And by accepting these difficulties, we're showing, it shows that we've understood the importance of giving service to the spiritual master. जब हम इस प्रकार की कठिनाइयां स्वीकारते हैं तो हम ये इस बात का ये प्रतिनिधित्व है कि हम गुरु की सेवा का महत्व समझ चुके हैं. It is said, Mahat Sevam Dwara Mahor Vimuktes. By serving a Mahatma, by serving a great soul, it opens the doors to liberation. ऐसा कहा गया है महत सेवा द्वारम आहुर विमुक्ते. एक महान आत्मा की सेवा करके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं. So the spiritual master was a Mahatma, and he got that position of spiritual master. He became a Mahatma by personally serving his spiritual master. तो जो गुरु होते हैं वो महात्मा है और उनको वो महात्मा का पद प्राप्त हुआ है व्यक्तिगत रूप से अपने गुरु की सेवा करके. Just like Lord Chaitanya Mahaprabhu accepted Ishwara Puri as his spiritual master, and Ishwara Puri, he had served his spiritual master Madhavendra Puri. तो जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को अपने गुरु के रूप में स्वीकारा था और ईश्वरपुरी ने अपने गुरु की सेवा की थी जो थे माधवेंद्र पुरी. And Ishwara Puri was taking care of Madhavendra Puri at the end of his life, when Madhavendra Puri's health was very bad and
he was having problems with his body was breaking down, he was preparing to leave the world, but Ishvara Puri stayed with him and served him and helped him to remember Krishna. तो ईश्वर पुरी अपने गुरु माधवेंद्र पुरी की सेवा कर रहे थे उनके जीवन के अंत में, जब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और उन्हें स्वास्थ्य के साथ काफी कठिनाई थी, उनका स्वास्थ्य टूट रहा था और वो इस जगत से जाने की तैयारी कर रहे थे। उस समय उन्होंने अपने गुरु की सेवा की थी, उनके साथ रहे थे और उनको कृष्ण का स्मरण करने में सहायता की थी। In old age, at the end of life, the body breaks down and the different organ system, the working of the body is so many problems. It's difficult sometimes to take care of people in that kind of condition. You need to have a lot of tolerance and a lot of patience. तो जीवन के अंतिम समय में शरीर टूटने लगता है, शरीर के चलने में काफी कठिनाइयां आने लगती हैं और उस समय एक व्यक्ति की देखभाल करना ये कठिन होता है। इसमें बहुत सहनशीलता चाहिए होती है, बहुत सब्र से काम लेना होता है। But Ishvara Puri took that responsibility to serve his spiritual master. He stayed with them, he cleansed his body, and he helped him to remember Krishna until he left the body. परंतु ईश्वर पुरी ने उस समय ये जिम्मेदारी उठाई अपने गुरु की सेवा करने की। वे उनके साथ रहे, उनके शरीर को साफ किया और उनको सहायता की कृष्ण को याद करने में, कृष्ण का स्मरण करने में, जब वो शरीर छोड़ रहे थे। And we can see the result of Ishvara Puri's service to his guru was that he went on to become the next acharya in the line of disciplic succession. And Chaitanya Mahaprabhu came and became his disciple. तो हम देख सकते हैं इसका क्या परिणाम निकला। ईश्वर पुरी ने जो सेवा की अपने गुरु के लिए, इसका परिणाम ये निकला कि ईश्वर पुरी आगे जाके उस परंपरा में एक आचार्य बने और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए और उनके शिष्य बने। In contrast, there was another disciple of Madhavendra Puri called Ramachandra Puri. And that Ramachandra Puri, he came to see Madhavendra Puri at the time of leaving his body, and he tried to instruct him about the impersonal Brahman. और इसके विपरीत हम देखते हैं एक और शिष्य माधवेंद्र पुरी के, रामचंद्र पुरी। वे माधवेंद्र पुरी के पास आए थे उनके अंतिम समय में और उनको आदेश देने लगे निराकार ब्रह्मन के विषय में। Madhavendra Puri was feeling separation from Krishna, and in his separation from Krishna, he was lamenting. So the Ramachandra Puri came there, and Ramachandra Puri said to his guru, "Oh, you should not lament, you should meditate on the Brahman. Meditate on the Brahman, you'll become joyful." तो माधवेंद्र पुरी जी कृष्ण से विरह की भावना में थे और इसलिए उनको थोड़ा विलाप हो रहा था। परंतु रामचंद्र पुरी वहां पर आए और उन्होंने अपने गुरु से कहा, ओ आपको इस प्रकार विलाप नहीं करना चाहिए, आप निराकार ब्रह्मन पर ध्यान करो और उस वैसा करके आप प्रसन्न हो जाओगे। So although Ramachandra Puri was a disciple of Madhavendra Puri, he'd become influenced by impersonal philosophy. तो हालांकि रामचंद्र पुरी माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे, वो प्रभावित हो गए थे निराकार तत्व से। And he was so foolish that he dared to instruct his spiritual master about impersonal philosophy, telling him to become attached to the Brahman. और वो इतने मूर्ख थे कि वे अपने गुरु को आदेश दे रहे हैं निराकार तत्व के बारे में और उसे कह रहे हैं कि आप ब्रह्मांड से आसक्त हो जाओ। So Madhavendra Puri, when he heard his disciple speak like that,
he chastised them. He said, "Get out of here." He said, "I don't want to see your face at the time of death." तो जब माधवेंद्र पुरी ने अपने शिष्य को इस प्रकार आदेश देते हुए सुना, उन्होंने कहा, तुम इधर से निकल जाओ, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता मरने के समय। He said, "If I have to see your face at the time of death, I will never achieve my desired destination." उन्होंने कहा, अगर मैं आपका मुख को देखूंगा मृत्यु के समय, तो मैं कभी जो मेरी इच्छुक गंतव्य है उसको कभी पा नहीं सकूंगा। Madhavendra Puri was a very, very exalted devotee, and he was meditating on the pastimes of Radha and Krishna, and he was feeling the separation from Krishna in the mood of Srimati Radharani. तो माधवेंद्र पुरी एक बहुत ही उच्च भक्त थे और वो राधा और कृष्ण पर ध्यान कर रहे थे, और वो श्रीमती राधा रानी के मनोभाव में भगवान से विरह का अनुभव कर रहे थे। Yeah, there's one verse that's quoted in the Chaitanya Charitamrita, and Madhavendra Puri would recite this verse again and again at the time of leaving his body. तो एक श्लोक है श्री चैतन्य चरितामृत में, और माधवेंद्र पुरी जी बार बार इसका उच्चारण किया करते थे शरीर त्यागने के समय। Ai dina dayadra nata he mathura nata nalakalokrasi. The verse says, "Oh, where are you now, O master of Mathura? Because of not seeing you, my most agitated heart has become unsteady." तो ये श्लोक है ए दीननाथ। तो यहाँ पर माधवेंद्र पुरी कह रहे हैं कि ओ कहाँ हो आप मथुरा के नाथ, आपको नहीं देखने के कारण मेरा उत्तेजित हृदय अस्थिर हो गया है। So this verse was recited by Madhavendra Puri again and again. It said only 3 people can understand the meaning of this verse: Srimati Radharani, Sri Chaitanya Mahaprabhu, and Madhavendra Puri. तो ये श्लोक बार बार माधवेंद्र पुरी उच्चारण कर रहे थे, और कहा गया है कि खाली 3 लोग इसका अर्थ समझ सकते हैं, श्रीमती राधा रानी, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री माधवेंद्र पुरी। So Ishwara Puri was serving Madhavendra Puri and taking care of him and helping him remember Krishna and take care of his body, bring him food and clean his body for him. तो ईश्वर पुरी स्मरण का सहायता कर रहे थे माधवेंद्र पुरी का, कृष्ण के स्मरण कराने में, उनकी देखभाल कर रहे थे, उनके शरीर का ध्यान रख रहे थे, उनको खाना ले आते, उनके शरीर को साफ करते। So because he served his guru so nicely, Ishwara Puri became the spiritual master of Lord Chaitanya, and he became the acharya in the line of disciplic succession. तो क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की इतनी अच्छे से सेवा की, तो वे चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने ईश्वर पुरी, और एक प्रसिद्ध आचार्य बने इस गुरु परंपरा में। So that was the mercy of the spiritual master. That's how the mercy of the spiritual master came to Ishwara Puri. तो ये कृपा थी उनके गुरु की, इस प्रकार से उनको अपनी गुरु की कृपा ईश्वर पुरी को प्राप्त हुई। But Ramachandra Puri, he's an example of one who didn't get the mercy of the guru. He didn't take the mercy. Instead, what happened to him, he became a victim of fault finding. And everywhere he went, he'd find fault with people. और इसके विपरीत रामचंद्र पुरी उदाहरण है उस व्यक्ति के जिनको गुरु की कृपा नहीं मिली, और इसके विपरीत वो आसक्त हो गए लोगों में दोष ढूंढने में, जहां भी वो जाते सभी में दोष ढूंढते। And even he came to Jagannath Puri and he went to see Lord Chaitanya Mahaprabhu and he found fault with him. और वो जब जगन्नाथ पुरी भी गए और जब चैतन्य महाप्रभु
से मिलने गए, चैतन्य महाप्रभु में भी दोष ढूंढने लगे। He came to Chaitanya Mahaprabhu and he saw there were many insects around the floor. And he said, look, he said, so many insects are here. You must be keeping food here. That's why all these insects are coming. And then he said, I know you Gaudiya Vaishnava people eat too much. तो जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए तो वहां पर काफी कीड़े थे, तो उन्होंने जमीन पर, तो उन्होंने कहा, अच्छा यहाँ पर इतने कीड़े हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए होंगे क्योंकि आप लोग यहाँ खाना रखते हो, इसलिए तो कीड़े आ रहे हैं, और मैं जानता हूँ आप सब गौड़ीय वैष्णव बहुत ज्यादा खाते हो। So when Lord Chaitanya Mahaprabhu heard this, Lord Chaitanya Mahaprabhu ordered his servant. He said, from now on, reduce my prasadam. He said, I only want to take 1/3 of what you usually serve to me. Don't bring me a lot of nice prasadam. Reduce my prasadam to 1/3. तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये बात सुनी तो उन्होंने अपने दासों से कहा कि जितना प्रसादम वे उनके लिए लाते हैं उसको कम कर दो। उन्होंने कहा, जितना प्रसादम आप मेरे लिए लाते थे उसका अब 3 भाग करके 1/30वां भाग ही लेके आओ। मेरे लिए इतना अच्छा प्रसाद मत लेके आओ। इस प्रसाद उनसे लेना घटा दिया। So all the devotees, all the followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu were very sorry to hear this, that Lord Chaitanya was going to reduce his prasadam. They knew actually he didn't eat very much, but he didn't want to be criticized by the Shramachandra Puri. तो ये सुन के जो चैतन्य महाप्रभु के सभी अनुयायी हैं, वो उनको बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस किए, वो बहुत शर्मिंदा महसूस किए वो कि चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार प्रसाद लेना कम कर दिया है। वो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु इतना नहीं खाते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु फिर भी कम करना चाहते थे ताकि वो रामचंद्रपुरी द्वारा इस प्रकार से आलोचना नहीं सुनना चाहते थे। And after Ramachandra Puri left, only then did Lord Chaitanya again take his normal prasadam. और जब रामचंद्रपुरी चले गए उसके बाद ही चैतन्य महाप्रभु ने पहले की तरह सामान्य रूप से प्रसाद लेना शुरू किया। So you see what happens if you don't get the mercy of the spiritual master, you become critical people. You just go around finding fault with everyone. And he was so offensive, he found fault with Lord Chaitanya. तो हम देख सकते हैं कि अगर हमको गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती है तो किस प्रकार हम हो जाएंगे, हम सभी लोगों के प्रति बस दोष ढूंढने में लग जाएंगे, जैसे रामचंद्रपुरी सब में दोष ढूंढने लगे और यहाँ तक कि वो भगवान चैतन्य महाप्रभु में भी दोष ढूंढने लगे। So Sudama he can understand the identity of Lord Sri Krishna, and we can see from the final verse of the chapter that he understands Lord Krishna, that his body is the form of the absolute truth. तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार सुदामा भगवान कृष्ण की क्या पहचान है वो समझ सकते हैं, और अंत में हम देखते हैं कि वो समझते हैं कि जो कृष्ण का जो रूप है वो परम सत्य का रूप है। And he appreciates that Lord Krishna was just simply playing the part of an ordinary human being when he went to live in the ashram of his spiritual teacher. और वो इस बात का भी गुणगान करते हैं कि भगवान कृष्ण एक साधारण व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जब वो अपने गुरु के आश्रम में रहने के लिए आए। Lord Krishna wants to show the example to everyone, because people will always follow the example set by others. तो भगवान श्री कृष्ण दूसरों को ये उदाहरण दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो हमेशा जो दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति करते हैं उसका
अनुसरण करने की प्रयास करेंगे। The Bhagavad Gita says, Yad yad acharati shrestha tad eve tarojana sayat pramanam kurute lokastad anuvartate. Whatever standards a saintly person, whatever standards that the leader sets, other people will follow in his footsteps. तो भगवत गीता में ये श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठ, के जो भी जिस प्रकार अगर एक जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, जिस प्रकार की जो भी वो कार्य करेगा, जिस प्रकार के मानक वो स्थित करेगा, जो साधारण व्यक्ति है उसी का पालन करेंगे। So the whole advertising industry is based on this principle. We will see how different products are advertised by promoting some famous person, what they use, what products they use, and they say this man, he uses this or she uses this, and because they're so famous, so everyone else wants to follow their standards. तो पूरा जो हमारा विज्ञापन उद्योग है, हम देखते हैं कि वो इस नियम पे पालन करता है कि वो दिखाते हैं बड़े बड़े जो यशस्वी भौतिक यशस्वी व्यक्ति हैं, वो ये पदार्थों का उपयोग करते हैं, ये बड़ा आदमी ये उपयोग करता है, और इस प्रकार से ये विज्ञापन उद्योग इसी सिद्धांत पर काम करता है। We're very influenced by what other people do, and we like to follow the example set by others. तो हम बहुत प्रभावित होते हैं ये देख के कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और वो जो करते हैं हम उससे उदाहरण प्राप्त करते हैं। The problem is we don't know who to follow. We don't know who are the actual leaders. We don't know who are the real Shrestha, who are the real respected people in society. तो समस्या ये है कि हम ये नहीं जानते कि किसका अनुसरण करना चाहिए, कौन वास्तविक नेता की स्थिति में है, कौन वास्तविक श्रेष्ठ है, कौन वास्तविक रूप से समाज में आदरणीय है, हमें ये नहीं पता। The so-called leaders today are simply people who are expert in satisfying their senses in so many gross material activities. तो जो आजकल के नेता हैं वो केवल दक्ष होते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करने में, बहुत ही स्थूल भौतिक तरीके से। And people may also criticize Lord Krishna because we know there are certain pastimes of Lord Krishna which are not to be imitated, which are not to be followed. और इसलिए लोग भगवान कृष्ण की भी आलोचना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं भगवान कृष्ण की कुछ लीलाएं हैं जिनकी नकल नहीं करनी चाहिए। Particularly activities like Lord Krishna's Rasa Lila, his pastimes with the gopis of Braja. Then people want to imitate that, but that's very bad. तो विशेष करके भगवान कृष्ण की लीलाएं जैसे कि रास लीला, उनकी लीलाएं व्रज गोपियों के साथ, तो लोग इसकी नकल करना चाहते हैं और ये बहुत बुरा है। So when Krishna lived in Dwarka, then he was showing the activities of the leader, of the respected man. He was an ideal householder. He took care of all of his wives, and he took care of the kingdom of Dwarka. If there was any disturbance, he would deal with it. तो जब भगवान कृष्ण द्वारका में रहते थे तब उनके जो कार्य थे वो एक आदरणीय व्यक्ति की तरह थे, एक आदर्श गृहस्थ की तरह थे। वो अपनी सारी पत्नियों की देखभाल करते थे, वो अच्छे से द्वारका का राज्य संभालते थे। अगर वहाँ कुछ भी कठिनाई आती थी तो उससे निपटते थे। So some people may think, well, Lord Krishna lived with 16,108 queens, so
I would also like to have more than one queen. I need to have many wives. I should have many queens like Krishna. We want to imitate this. तो इसमें से बहुत लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अच्छा, कृष्ण 16,108 रानियों के साथ रहते थे, तो मुझे भी मेरी एक से ज्यादा रानी होनी चाहिए, एक से ज्यादा पत्नी होनी चाहिए। तो कृष्ण की इतनी रानियां थी, तो मैं भी एक से ज्यादा विवाह करूंगा, और इस प्रकार से नकल करने का सोचते हैं। So Lord Krishna was showing the example of ideal householder. He expanded himself into 16,108 forms, and he could live with each wife separately, and he provided for each wife a palace. तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक आदर्श गृहस्थ का उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने 16,108 रूपों में अपना विस्तार किया, और हर एक पत्नी के साथ अलग से रहते थे, और हर एक पत्नी के साथ उनका एक महल था। So we don't want to try to imitate Krishna to have many wives, but we want to imitate the example that he's an ideal householder in taking care of all the family duties. तो हम कृष्णा की इस प्रकार से नकल नहीं कर सकते हैं कि उनकी इतनी सारी पत्नियां थी तो हमारी भी हो, परंतु हमें उससे ये शिक्षा लेनी है कि किस प्रकार कृष्णा एक आदर्श गृहस्थ थे, वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को सही से निभाते थे। We have to understand what we can follow and what is for following and what is not. Some activities are the activities of the Supreme Personality of Godhead, and other activities are for us to learn what is the proper behavior for a common man. तो हमें समझना है किस कार्य की अनुसरण कर सकते हैं और हमें अनुसरण कर। Haribol. Haribol. Maharaj seems lost. Seems Maharaj connection lost. It seems he will connect again. Hare Krishna. Oh, you'll connect again. Okay. Yes, Maharaj. Oh, you back? Okay. Yeah. Okay. So people who are unscrupulous people, they want to jump immediately to Krishna's pastimes with the gopis and the Rasa Leela. They don't understand that this is the affairs of the spiritual world. This is not to be imitated. तो जो व्यक्ति होते हैं, जो बेशरम किस्म के व्यक्ति होते हैं, हम देखते हैं वो सीधा कृष्ण की रासलीला पर प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन हमें समझना है कि ये जो रासलीला है ये आध्यात्मिक जगत की लीलाएं हैं, इनका हम नकल नहीं कर सकते। So these pastimes, like pastimes in Vrindavan, they are concealed from the ordinary people. They are kept in the 10th canto Srimad Bhagavatam. So before coming to the 10th canto, before hearing the pastimes of Krishna, one should first understand the other potencies of Lord Krishna. तो ये जो वृंदावन की लीलाएं हैं, हमें समझना है, इनको गुप्त रूप से रखा हुआ है श्रीमद् भागवतम में, साधारण लोगों से छुपाकर इनको 10वें स्कंद में रखा हुआ है। तो 10वें स्कंद की लीला सुनने के पहले हमें पहले के जो सब स्कंद हैं उनको सुनना है और भगवान की दूसरी शक्तियों को भी समझना है। Yeah, the 10th canto of Bhagavatam is like the face of the Lord. But before you look on the face of the Lord, you have to first look to the lotus feet and then gradually look up to the face. Not that you immediately look on the face. तो हमें समझना है कि जो भगवान का 10वां स्कंद है ये भगवान के पद्म मुख की तरह है। तो किसी व्यक्ति के हम मुख को देखते हैं तो उसके पहले हमको भगवान के चरण देखने हैं
सीधे से हम उनके मुख में नहीं देख सकते तुरंत ही जाके। So we hear Srimad Bhagavatam from the beginning. The first two cantos are the Pada Padma, the lotus feet. And we hear about the Lord's creative potency, the Shristi Tattva. तो हमें समझना है कि हमें श्रीमद् भागवतम शुरुआत से सुननी है। तो जो पहले दो स्कंद हैं वो भगवान के चरण कमल हैं, सृष्टि तत्व है, तो वहां से हमें शुरुआत करते हुए सुनना है। We have to understand how the Lord has inconceivable potencies. Then only we can go on to understand more about Krishna's pastimes. हमें समझना है कि किस प्रकार भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं, फिर ही हम आगे जाके भगवान की लीलाओं को और समझ सकते हैं। So although Lord Krishna comes into this world and he plays the part of an ordinary human being, he's never an ordinary person. तो हालांकि भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में आते हैं और एक साधारण व्यक्ति की तरह भूमिका निभाते हैं, परंतु वो कभी भी साधारण व्यक्ति नहीं है। As Lord Krishna himself says in the Bhagavad Gita, Abhajananti mam mudha manushim tanam ashritam param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. The foolish mock at me, descending amongst them like a human being. They do not know my transcendental nature and supreme dominion over all that be. तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अवजानंती माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रिता, कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं ये कहते हुए कि मैं साधारण व्यक्ति ही जैसे यहाँ आया हूँ। वो जो मेरी दिव्य स्थिति है उसको नहीं समझ पाते, और जो मेरा सर्वोच्च प्रभुत्व है हर चीज के ऊपर वो नहीं समझ पाते। And then the next verse in the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes the results of thinking Krishna an ordinary person. और जो अगला श्लोक है भगवत गीता में, वो इसका परिणाम बताता है कि क्या परिणाम होगा अगर हम कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझेंगे। He says, Mogasya moga karmano moga jnana vichetasa rakshasi masurim chaiva prakritim ashrita. Whatever they try to do, all their attempts for liberation and their desires for fruitive results, whatever they try to do, they will always meet with a failure. They will never be successful. तो अगला श्लोक ये है, मोग आशा मोग कर्म मोग ज्ञान विशेषतः। तो इसमें कहा गया है कि वो व्यक्ति जो कुछ भी करने का प्रयास करेंगे, जो भी उनकी क्रियाएं होंगी मुक्ति पाने के लिए, या तो उनको जो भी इच्छा होगी भौतिक फल पाने के लिए, वो सब हमेशा असफलता ही प्राप्त करेगी, वे कभी भी सफल नहीं होंगे। So here in this chapter with Sudama Brahman, we're hearing about Lord Krishna's wonderful relationship, how he reciprocates with his devotees. He is Bhakta Vatsala. तो यहाँ पर इस सुदामा ब्राह्मण के अध्याय में हम सुनते हैं कि कितना अद्भुत संबंध है भगवान का अपने भक्त के साथ और कैसे वो आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान भक्त वत्सल है। Sudama, so humble, gentle soul, comes to see Lord Krishna, and although he's totally impoverished, he never asks Krishna for anything. Doesn't have the heart to ask for anything. He's just so happy to be with Krishna. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुदामा इतने विनम्र हैं, इतने कोमल आत्मा हैं कि वो कृष्ण को देखने आते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण से कुछ पूछते नहीं। तो वे इतने गरीबी में हैं, लेकिन फिर भी वो कृष्ण से कुछ पूछते नहीं। उनके पास वो हृदय ही नहीं है कृष्ण से कुछ मांगने के लिए। वो इतने खुश हैं केवल कृष्ण का संग प्राप्त करके। So Krishna enjoys this kind of friendship, this Sakya Ras. This is just like with Arjuna. Lord Krishna and Arjuna had such wonderful friendship.
Lord Krishna with the cowherd boys. They had this kind of friendship. So similarly, Sudama also has deep friendship with Lord Krishna. तो हम देखते हैं कि कृष्णा भी इस प्रकार की जो मित्रता है सुदामा के साथ उसमें आनंद लेते हैं। ये सख्य रस है, बहुत अद्भुत मित्रता है। जैसे भगवान कृष्ण की गोपों के साथ थी, उस प्रकार सुदामा के साथ भी उनकी मित्रता बहुत गहरी है। So we'll stop here. We'll ask if there's any questions. तो हम यहाँ रुकेंगे और देखेंगे कि क्या आप में से किसी को कोई प्रश्न है। In the next chapter, we will hear how Lord Krishna is going to bless Sudama. Although Sudama didn't ask for any blessings, but because he'd given that the dried rice which he brought was accepted by Lord Krishna. So Lord Krishna repays him. तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार कृष्ण सुदामा को आशीर्वाद देते हैं। हालांकि सुदामा ने कुछ मांगा नहीं था उनसे, परंतु फिर भी उन्होंने कृष्ण को सूखे चावल दिए थे और कृष्ण ने उसे स्वीकारा था। तो उस लिए कृष्ण वापस सुदामा को ये चुकाते हैं। So Sudama gave everything he had to Krishna. So Krishna wants to repay him. Krishna wants to give back everything he has. सुदामा ने कृष्ण को सब कुछ दे दिया था जो उनके पास था, तो कृष्ण भी इसको वापस चुकाना चाहते हैं, सब कुछ वापस सुदामा को देना चाहते हैं। So that is the way of Bhakta Vatsala. You reciprocate with Lord Krishna, reciprocation with Krishna by devotion, not by gyan, not by karma, only by devotion. तो ये भक्त वत्सलता है, भक्ति द्वारा भगवान के साथ आदान प्रदान, ज्ञान द्वारा नहीं और कर्म द्वारा नहीं, भक्ति द्वारा। Lord Krishna always emphasizes it's only by devotion he can be understood. And we see this devotion in the heart of Sudama, how he is a wonderful devotee. He has no material desire. He's totally detached from everything, and he just simply wants to be with Krishna. He's enjoying to be with Krishna and considering himself so fortunate to be with Krishna. तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण भी हर समय जोर देते हैं कि वे केवल भक्ति द्वारा समझे जा सकते हैं, और ये कितने अद्भुत लीला है सुदामा के साथ। सुदामा का हृदय इतना शुद्ध है, वो इतने शुद्ध भक्त हैं, उनके पास कोई भौतिक इच्छा नहीं है, वो हर सब चीजों से अनासक्त हैं और वो केवल आनंद लेते हैं कृष्ण के साथ रहने में। And we also consider ourselves to be so fortunate that we can be reading and chanting and hearing about Krishna with the devotees. तो हम अपने आप को भी इसलिए भाग्यशाली समझते हैं कि हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं कृष्ण की इन लीलाओं के बारे में जो उनके भक्तों के साथ है। Okay, any question? किसी को कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। Hare Krishna, thank you Maharaj. We are having a very nice, wonderful association, and we are able to understand what is the relation between Guru and Shishya, and also the glorification of Sudama to the Lord. All this we have learned today. And there's a small question from Maharaj. In case during after being in the service of the Lord for so long years, but one gets sometime at the end of his life, he becomes unconscious or became sick and he could not take the names of the Lord. So what is the way kingdom when such cases? Hare Krishna Maharaj. तो प्रभु का ये प्रश्न है कि अगर कोई बहुत समय सेवा में बिताता है
लेकिन जीवन के अंत में बेहोशी में है या बीमार है या भगवान का नाम नहीं ले सकता है, तो उस प्रकार के भक्त की क्या परिस्थिति होती है आगे? The Garuda Purana says, even if we somehow we're not able to remember Krishna at the end of the life, but if we've dedicated our life for the service of Krishna. The appointment with that machine person. Inform me, if you want, I can come with you. हरे कृष्णा, सब माइक म्यूट कर दीजिए. If Lord Krishna, it says in Guru Purana, Lord Krishna is saying that even somebody cannot remember me at the time of death, but if throughout their life they've dedicated their life to me, then I will remember them and I will deliver them. तो गरुड़ पुराण में ये बात बताई गई है कि अगर कोई कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकता है शरीर छोड़ने के समय, लेकिन अगर पूरा जीवन भर उन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित किया है, तो भगवान कहते हैं मृत्यु के समय मैं उनको याद करूंगा और उनका उद्धार करूंगा. Yeah, in Bhagavad Gita, chapter 12, Lord Krishna says, I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. It's Krishna who delivers the devotee. Krishna knows who has surrendered, who has dedicated their life to them, and Krishna will deliver them at the time of death. तो 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि वो एक भक्त के लिए जो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालने वाले हैं, तो कृष्ण जानते हैं कि कौन समर्पित भक्त है और किसने अपना जीवन समर्पित किया है. Okay. थैंक यू महाराज, थैंक यू. और किसी का प्रश्न है तो महाराज से पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके. हरे कृष्णा. Vidyagati Prabhu, there is a question in the chat box. Nandkishore Prabhu, can you read that question in the chat? Yeah. तो प्रश्न है, हरे कृष्ण महाराज, kindly accept humble obeisances. Why it takes so long for Lord to bless Sudama, despite they were close friends since childhood? Thank you so much. तो यहाँ पर एक प्रश्न है महाराज से, महाराज को प्रणाम करते हुए कि क्यों सुदामा को भगवान को आशीर्वाद देने में इतना लंबा समय लगा, हालांकि वो बचपन के दोस्त थे. Well, I don't know what you mean. Why it takes so long? Why you have to be so impatient? Sudama was not anxious to get anything from the Lord, and so the Lord didn't worry about him because he knew Sudama was not eager to get anything. तो मुझे नहीं पता आपका अर्थ क्या है जब आप बोल रहे हैं इतना लंबा समय, तो आप इतने बेताब क्यों हो रहे हो. तो यहाँ पर बात यह है कि सुदामा भगवान से कुछ नहीं चाहता था, इसलिए पहले भगवान इतने चिंतित नहीं थे उसे कुछ देने के लिए, क्योंकि सुदामा ही इच्छुक नहीं होता था भगवान से कुछ पाने के लिए. Sudama was not worried. He had no anxiety. He had no problem. The only problem was his wife. His wife was having some difficulty. She was a bit worried about their material situation. But Sudama personally had no difficulty. तो सुदामा को कोई चिंता नहीं थी, कोई कुंठा नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी. उनकी पत्नी को थोड़ी चिंता थी, उनकी पत्नी को चिंता थी उनके भौतिक स्थिति के बारे में, परंतु सुदामा को कोई कठिनाई नहीं थी. The difficulty for Sudama was to accept opulence. When the opulence came, when Krishna gave them the opulence, that became the difficulty for Sudama. तो सुदामा को जो कठिनाई थी वो थी इतना ऐश्वर्य भगवान से स्वीकार करना. जब भगवान ने उन्हें इतना ऐश्वर्य दिया, उसको स्वीकार करना, ये सुदामा के लिए कठिनाई थी. So Sudama accepted it all in the mood of renunciation. And quick after being benedicted by Lord Krishna, in a very short time, he went back to Godhead. तो सुदामा ने इस सब ऐश्वर्य को स्वीकारा त्याग की भावना में, और इस प्रकार से भगवान द्वारा ये ऐश्वर्य पाते कुछ समय बाद ही सुदामा वापस भगवत धाम चले गए.
So we cannot question the Lord, you know, why you did like this, why you took so long. It's not. We have to just simply be thankful that the Lord is displaying this wonderful relationship with his devotee. We don't question Krishna, why you took so long. तो हम इस प्रकार भगवान को सवाल या प्रश्न नहीं कर सकते कि आपको इतना लंबा समय क्यों लगा सुदामा को देने के लिए। हमें तो सिर्फ कृतज्ञता की भावना रखनी है कि भगवान अपने भक्त के साथ इतने अच्छे संबंध को हमारे सामने दर्शा रहे हैं। तो हमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए क्यों भगवान को इतना लंबा समय लगा। But Krishna wants to show the glory of his devotees. He wants to show the greatness of devotees like Sudama. You could say like that maybe that's why it was some time before Krishna benedicted Sudama. He wanted to show how the devotee is selfless, how the devotee has no material desire. तो कृष्ण अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं, उनकी महानता दिखाना चाहते हैं कि कितने महान हैं सुदामा जैसे भक्त। तो इसलिए ये हम एक कारण दे सकते हैं कि कृष्ण ने इतना समय लिया सुदामा को ये वरदान देने के पहले, कि कृष्ण दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार सुदामा महान है और सुदामा बिल्कुल निस्वार्थ हैं और उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। You see, for example, Krishna, when he was going out from Dwarka, he went to visit Maharaj Bahulasva, and he also went to visit the Brahmin Shrutadev. And Bahulasva was living in great opulence. He was a king. And Shrutadev was a Brahmana. He was living very simply, very poor. Krishna went to see both of them. He saw them both equally. He's not considered one's rich and one's poor. He's not considered, oh, one's in difficulty and the other's enjoying. No, he saw they're both happy, doing their duty. They're Brahman. One is a Brahman, the other is a Kshatriya. And they're living according to their means and they're happy in their position. तो हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण द्वारका से निकले तो वो ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि वो महाराज बहुलश्व के पास भी गए और श्रुतदेव के पास भी गए। तो महाराज बहुलश्व ऐश्वर्य में रहते थे, वो राजा थे, और श्रुतदेव ब्राह्मण थे। वो बहुत सरलता से रहते थे, एक बहुत सरल जीवन। परंतु कृष्णा दोनों को मिलने गए। कृष्ण के लिए दोनों एक बराबर थे। कृष्ण ने ये नहीं देखा कि एक अमीर है और एक एकदम सरलता से जी रहा है, या कोई कठिनाई में है और कोई भोग कर रहा है। नहीं, कृष्ण ने देखा नहीं, दोनों अपना कर्तव्य कर रहे हैं। एक ब्राह्मण है और एक क्षत्रिय है, तो दोनों अपने कर्तव्य के हिसाब से जी रहे हैं और दोनों उसमें प्रसन्न है। Okay, Hare Krishna. Any other question? I think time's up, Nelia. Yeah, time's up. Okay. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. I can't hear anything. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, Maharaj, we will continue with the other session program and other announcement. Thank you, Maharaj, for wonderful class. I'm not hearing anything. No, Hare Krishna, Maharaj, I was thanking you, Maharaj. I was thanking you for the wonderful class, and we will continue with the other session, today's other session. Okay, thank you, Prabhu. Hare Krishna. पढ़ते हुए हमें इस ग्रेस जय गोविंद प्रभु को हम आग्रह करते हैं कि कुछ सूचना के लिए दामोदर देश का सूचना है, उसके लिए आगे आके हम बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण विद्यागति प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले महाराज को धन्यवाद प्रकट करते हैं। इतना सरलता से हमको इतना शास्त्र के बारे में ज्ञान देते हैं महाराज। महाराज एसोसिएशन इज ऑलवेज वेरी ब्लिसफुल। मैं एक्चुअली एक प्रश्न पूछना चाहता था, नॉट प्रश्न। महाराज इज एसोसिएटेड विद आवर मायापुर इंस्टीट्यूट, और जब मायापुर इंस्टीट्यूट का शुरुआत हुआ था उससे महाराज जुड़े हुए हैं। मैं सभी भक्तों से एक महाराज का मुखारविंद से कुछ उसके बारे में सुनना चाहता था। एनीवे, महाराज इज नॉट इन द कॉल, वी विल टेक सम अदर टाइम। एंड वैसे अभी कीर्तन रस आने वाला है। कीर्तन रसा दिसंबर 1, 2, 3 तारीख तक चलेगा। वहां पर रोज 12 घंटा कीर्तन होगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि ज्यादा संख्या में ये न्यूज को स्प्रेड कीजिए। ब्रिंग ऑल योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबको वहां पर लेकर आ जाइए। वैसे तो दिसंबर 1, 2, 3 पूरा छुट्टी रहते हैं यूए में, तो सभी निवेदन है सब वहां पर आइए। और आज का प्रेयर रिक्वेस्ट में हमारा एक वंडरफुल सेवादारी ऑफ आवर एनबीएस सुभाष प्रभु, उनका जन्मदिन है। मैं महाराज से और सभी भक्तों से आग्रह करता हूँ उनको आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े और ऐसे ही सेवा मनोभाव रखे और निरंतर भगवान का सेवा करते रहे, भगवान और वैष्णवों का सेवा करते रहे। हरे कृष्णा। ओवर टू विद्यागति प्रभु फॉर फर्दर प्रेयर्स। हरे कृष्णा। तो वे आज का शुभ अवसर पर हमें आनंदित हो रहा है। सुभाष जी प्रभु का आज जन्मदिन के लिए उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि साथ साथ लोकपालिका ललिता माता जी का मदर, उनका मम्मी, उनका माता के लिए प्रेयर करेंगे और उनके साथ साथ निकिता चंगलानी सोनी, उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। और हम सब आज जूम में जुड़े हुए सभी श्रोता मतलब सभी भक्तों के लिए हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम भक्ति में और एनबीएस का रोज सुनकर हमें और अच्छी तरह भक्ति में आगे बढ़े। और सभी और जो भी हमारे मित्र है, हमारे रिश्तेदार है, सभी को हमें नियर एंड डियर है, सबको हम एनबीएस में जोड़ेंगे और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम सबके साथ साथ चलेंगे। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आज का नित्यम भागवत सेवा को हम यहाँ समाप्त करेंगे। और कल के लिए हम उत्साहित रहेंगे या और कुछ किसी भक्तों का मुखारविंद से सुनने के लिए। तो 3 बार हमारे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। और कल के लिए हम उत्साह से रखेंगे प्रेयर। अभी आखिरी में मधुर प्रभु ने अपराजिता माता जी के पिताजी का जन्मदिन के लिए प्रेयर का रिक्वेस्ट किया है, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करेंगे। चित्रा माता जी आप होस्ट हैं, यू कैन एंड द सेशन। हरे कृष्ण।